सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हमारी हुकूमत ईरान पर अमेरिका की एकतरफा बमबारी की मजम्मत करेगी, जो कि बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान ने मजीद कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर किए गए हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं और इस मामले पर भारतीय हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक है। We are building the Chabar port in Iran. We are going to operate it for 20 years. That is, through that port, we'll be entering into other parts of Afghanistan. We have historic relationship with Iran. We have a strategic relationship with US also. I hope that our government would condemn this unilateral bombing of US, which is violation of international law, which is violation of UN Charter. It is violation of NPT, and I hope that the government will condemn this bombing of this Iranian nuclear plants which has happened today. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू फलस्तीनियों का कातिल है, वो गाजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ओवैसी ने अमरीका पर भी इल्जामात आयद करते हुए कहा कि अमरीका की पॉलिसी सिर्फ इसराइली हुकूमत के जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल नस्लकुशी है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा। इन्होंने सवाल उठाया कि कोई क्यों नहीं पूछता कि इसराइल के पास कितने जौहरी हथियार हैं। The history will be changed for bad, because if a war erupts, which all likelihood looks like that, then this man he was butchered Palestinians. He has no right to talk about history. There is a international criminal court, international court of justice warrant is pending against this person, who happens to be the Prime Minister of Israel, and he is doing ethnic cleansing of Palestinians in Gaza and in West Bank. So the better he talks about history, but history will remember him as butcher of Palestinians. No, we are building the Chabar port in Iran. We are going to operate it for 20 years. That is, through that port, we'll be entering into other parts of Afghanistan. We have historic relationship with Iran. We have a strategic relationship with US also. I hope that our government would condemn this unilateral bombing of US, which is violation of international law, which is violation of UN Charter. It is violation of NPT. And I hope that the government will condemn this bombing of this Iranian nuclear plants which has happened today. You had bombed Iraq in 1981. Israelis have bombed it, and Saddam was very near becoming a nuclear weapon state. Secondly, you went into Iraq by creating this farce of weapons of mass destruction. Nothing was found over there. You removed Gaddafi in Libya, and nothing happened. Saddam was killed, Gaddafi was killed. US policy is only to cover up the crimes of the Israeli government. What is happening in Gaza? A genocide is happening, and no one is talking about it. So that is why I feel that it is very wrong. And why isn't no one asking how many nuclear warheads that Israel has? Israel is not a member of NPT. Israel does not allow. AIMIM के सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ओवैसी ने खबरदार किया है कि अगर खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता खित्ते में जंग छिड़ गई तो इसका संगीन असर करोड़ों हिंदुस्तानियों पर पड़ेगा जो वहां पर मुकीम हैं। वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की जिंदगी, रोजगार और सलामती शदीद खतरे में पड़ जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी कंपनियों ने अरब और खलीजी ममालिक में बड़ी सरमायाकारी की है और इन ममालिक से भारत को खासी गैर मुल्की सरमायाकारी भी हासिल होती है जो इस बुहरान से मुतासिर होगी।
One must also remember that there are more than 60 million Indians living in the Gulf or Middle East. And if that area erupts in a war, which, unfortunately the likelihood looks like that, then, it will have a grave impact on the Indians living over there. The investments which Indian companies have made in all these Arab countries or Gulf countries, and a substantial amount of foreign exchange comes from this area. And lastly, this boogie has been created about Iran having nuclear weapons or this and that. The same thing was used in Iraq, weapons of mass destruction. Nothing came out.